Absolutely. Prime Minister Shri Narendra Modi is negligent, callous and indifferent when it comes to management of COVID-19 disease in this country. Modi government has jeopardized and endangered the lives of millions and millions of Indians by its negligent conduct. Modi government is completely careless and cruel when it comes to ensuring provision for medicines that are life-saving, including remdesivir, if I am pronouncing it correctly, and other life-saving drugs, in making available oxygen, which is so essential for people, in ensuring availability of beds, in ramping up the health infrastructure, in ramping up production of vaccinations, and in permitting as many candidates as possible, and in stopping, just for personal promotion of the Prime Minister, in stopping the vaccine Maitri initiative and exporting vaccine. Even yesterday, Mr. Jaishankar has made a statement, we will continue to export the vaccine to 80 countries in an interaction with ORF. Why? There is no vaccine for Indians. How can you jeopardize the life of Indians in this fashion? So yes, Prime Minister is negligent, Prime Minister is careless, Prime Minister is cruel, and Prime Minister is callous in tackling COVID-19. There is a national emergency happening. We know that Prime Minister is busy in public meetings. Instead of addressing the issues of vaccination, health infrastructure, medication, life-saving drugs, oxygen, availability of all of these. But Prime Minister needs to follow Raj Dharma and rise up to the occasion. Instead of following adversarial politics, there is no you versus me debate, Mr. Prime Minister, here. There is only a us versus Corona debate in this country. The second wave of Corona is here, and it is hitting the country hard. It is hitting the country with a ferocity that is hitherto unknown. The numbers are scary. The numbers I was looking at this morning, new cases in a single day are 1,84,372 or 1,85,000 with 1,027 deaths. This is unprecedented. This is completely unprecedented. We are now second highest in infection after the United States, surpassing Brazil. And Modi government has left the people to fend for themselves. It has utterly blundered despite having one full year to prepare in management, prevention, and making appropriate infra arrangements to tackle Corona. Today, across the country, there is huge vaccine shortage, with Government of India living in denial or indulging in abusing and attacking opposition governments and leaders. When former Congress President Shri Rahul Gandhi writes to the Honorable Prime Minister saying that all vaccine candidates should be permitted in light of the huge vaccine shortage, Prime Minister, instead of replying and considering this valuable suggestion, unleashes Ravi Shankar Prasad and Smriti Irani to level and hurl completely baseless and senseless accusations. Within 48 hours thereof, the same Prime Minister and the same government accept Shri Rahul Gandhi's suggestions and accepts that the new vaccine candidates must also be permitted.
That's the kind of double speak, myopia and adversarial approach of this government. 24 अप्रैल तक इंतजार करिए। इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग, जैसा मैंने आपको कहा, राष्ट्रीय पंचायती राज डे पे इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग, उसकी डिटेल्स, इसके एडिटर, डिप्टी एडिटर्स, इसके संचालक कौन होंगे, वो सब आपके सामने होंगे। जैसा मैंने कहा कि इनिशियली ये प्लान किया है कि 8 घंटे हर रोज ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव रहेगा और इसमें बाकायदा डिबेट्स, डिस्कशंस इत्यादि होंगी। इसका पूरा प्रारूप लगभग तैयार है। 24 अप्रैल को हम इसकी कंप्लीट डिटेलिंग आपको देंगे कि आज पूरे देश में अंधविश्वास और अंधभक्ति का चौतरफा अंधेरा है। विवेकहीनता और मानसिक गुलामी का वातावरण है। एक अहंकारी शासक के द्वारा जबरन थोपा जा रहा स्तुतिगान भी है और व्यक्ति पूजा का माहौल भी। अभिव्यक्ति की आजादी को कंस की तरह बेड़ियों में लपेटने का युग भी है। इसलिए ऐसे में सैकड़ों, हजारों, लाखों डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो प्रिंसिपल टेलीविजन चैनल्स हैं या अखबार हैं, उनके भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभिव्यक्ति की आजादी में अपनी अपनी रचनात्मक भूमिका दे रहे हैं। आप किसी से सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं। जैसा महात्मा गांधी ने कहा, हर व्यक्ति की अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी के साथियों को यह लगा, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन से और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके मार्गदर्शन से, कि अभिव्यक्ति की आजादी के इस यज्ञ में एक छोटा सा योगदान एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कांग्रेस के और एक और विपक्ष की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और होना चाहिए। और ये एक हमारी छोटी सी, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक छोटी सी शुरुआत है।